Okay, so let's get started. What we will do today is just quickly. Yeah, Hamad is here. You're right. You're right. Yeah, and I can tell you've been working hard. I can see your deals in the lineup in the pipeline. So that's good. Yeah. So what we will start with, we'll start with a couple of things on the Zillow. A couple of things I'll mention in terms of rent. Um, let's see. So one of the things, guys, I don't know if you know, आप लोगों को पता नहीं है या नहीं. बेसिकली इसमें जब आप कोई भी सिटी ढूंढते, फॉर एग्जांपल सेंट लुइस, और अगर हमें देखना है कि कैश ऑन कैश हमारा क्या आ रहा है, या आप देखना चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो रेंट पे है या नहीं है. ठीक है. तो आपने फॉर सेल पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर्स में रेंट लिखना है. रेंट्स और रेंट एंड अप्लाई. तो अब जिन जिन लिस्टिंग में रेंटेड लिस्टिंग है वो आपके सामने आएंगी, या उस जैसी आएंगी कि कुछ ना कुछ तो रेंट मेंशन होगा उसमें. Currently rent for 1500 per month. Okay. New roof, updated windows, brick structures, property sold as is. तो 89,000 की प्रॉपर्टी है, लेट्स से 90,000, और उसका जो रेंट है, इट्स अमेजिंग, राइट. अगर आप 1% रूल पे लगाएं तो कम से कम $890, राइट. दिस इज गोना बी द रेंट, 1% of the income. So $890, but the rent is 1500. ठीक है. तो जैसे ही आपको पता चले कि भाई 1% रूल से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, दैट मीन्स द कैश ऑन कैश विल बी वेरी वेरी गुड ऑन दिस. ठीक है. बहुत ईजी से स्टेप है, बहुत मुश्किल नहीं है. बस आपने जैसी आपने अंदाज़ा लगाना कि भाई प्रॉपर्टी कैश फ्लो करेगी नहीं करेगी. ठीक है. अगर प्रॉपर्टी कैश फ्लो करेगी तो आपने उसका नंबर देखना है, 89,900, राइट. इसको कहते हैं 1% rule in real estate. Okay, here the one person rule in real estate is a screening tool. Require property's gross monthly income rent must be at least 1% of its total purchase price, including renovation to ensure deposit gets shown. ठीक है. आपकी जो 1% रूल बोलता है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो परचेस प्राइस है एंड इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी, 1% रूल होना चाहिए उसमें. ओके. मतलब 1% रेंट होना चाहिए या उससे ज़्यादा. ठीक है. तो 1% ऑफ 89,900 का इजी फार्मूला यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को मूव कर देंगे यहाँ पर. तो ये 890 डॉलर्स और $899, समथिंग लाइक दैट. ओके. So let's just say 900, right? It's 90,900. So the rent has to be 900 or more. अगर 900 है तो हमारा 1% रूल मैच कर रहा है, which is a good thing. ये बस इजी तरीका है सुनने का, समझने का कि रेंट कितना है इसमें. ओके. तो आपने 1% रूल चेक कर लिया और अपना अपना रेंट चेक कर लिया. ठीक है. 900 का रेंट होना चाहिए, बट ये बता रहा है 1500 पर मंथ रेंट है. तो उसका मतलब आपका कैश ऑन कैश इस प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा है. ठीक है. फिर ये 3 बेड भी है, वन बात है, ऑलरेडी रेंटेड है. इस पे सेल्फ फाइनेंस आराम से लग सकती है. इस पर बल्कि आप जो चाहो लगा सकते हो, कैश भी लगा सकते हो, सेल्फ फाइनेंस भी, एवरीथिंग वुड वर्क. ठीक है. और ये 65 डेज से मार्केट पे है. इसका मतलब सेलर बोल रहा होगा कि भाई मुझे निकालो यहाँ से, आई नीड टू सेल. यहाँ पे 1500 पे इसने रेंट किया था, लिस्टेड फॉर अराउंड 12, एंड देन 1500 पे रेंट हुआ है, और 89,000 इसकी इनकम है. Peace be upon to you. Peace be upon to you too. Thank you. I want to join Ages community. I don't know what Ages community is. Majority is the 10% project करते हैं. Majority 10% रिजेक्ट करते हैं,
डाउन पेमेंट, देखिए वो रिजेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि आपका जैसे आपके पास कोई चीज़ है, राइट, आप बोलते हैं कि अ, आप फॉर एग्जांपल ये माउस है, राइट, आपको सेल करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है $10, आपको सामने वाला बंदा आता है और बोलता है कि मैं इसको ख़रीदूँगा, मगर मैं सारे पैसे अभी नहीं दूँगा, मैं सारे हर महीने आपको $1-1 दूँगा, तो 10 महीने में ये ख़रीदूँगा माउस। तो आप बोलोगे मुझे पैसे तो अभी चाहिए, मैं 10 महीने क्यों वेट करूँ, राइट? तो इस वजह से 10% की वो जो ऑफ़र है वो रिजेक्ट कर देता है कि आप मुझे पैसे अभी चाहिए, मुझे बाद में नहीं चाहिए, राइट? तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम इसको ज़्यादा पैसे बोलते हैं, ठीक है? तो हम अगर वो बोलता है $10 की है, तो हम बोलेंगे आपको हम $12 देंगे, ठीक है? हमें $2 ऊपर देंगे। अब वैसे तो $10 टू $2 का डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा, बोलेंगे बहुत छोटा सा है, मगर जब ये पैसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आते हैं, अब जैसे अगर $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इस पे 10% 1.1 मिलियन होता है, जो कि $100,000 एक्स्ट्रा होता है, राइट? और अगर $100,000 की प्रॉपर्टी है तो um, इसका 10% ओवर आस्किंग वुड बी 1,110 बेसिकली। तो इस वजह से हम उसको पैसे ज़्यादा देते हैं ताकि उसको इंटेंसिफाई करवाएं उसकी प्रॉपर्टी को, और उसको अच्छी लगे ये ऑफ़र, राइट? फिर उसको मंथली पेमेंट भी देते हैं और फिर उसको ये बताते हैं कि भाई अगर हमने 2 पेमेंट भी मिस करी तो घर पूरा आपका हो जाएगा, सारे मनी जो हमने पे किया है मंथली वो भी आपकी हो जाएगी, और डाउन पेमेंट भी आपकी हो जाएगी, राइट, टू मिनिमाइज द रिस्क सेलर का। Any update on yesterday's deal? Assalamu alaikum, walaikum assalam. For him, which one? I think you sent me 3 or 4. You sent me 3 or 4. So let me know which one you're talking about, and I can let you know. Okay, guys. Yeah, simple method. Basically, आप जो लिस्ट पर अगर प्रॉपर्टी 50,000 की लगी हुई है तो आप उसको 30% ऑफ लेके आओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और सबमिट कर दो, ठीक है? या अगर आप नहीं सबमिट करें, खुद से कर रहे हैं, तो आप फेसबुक एड्स होगा, यूट्यूब एड्स होगा, उस पर करो और उस पर वो प्रॉपर्टी भेज दो। अब आप ले फॉर एग्जांपल 50 की लगी हुई है, आप लेके आए हैं आई डोंट नो 35 की, ठीक है? तो आप सामने वाले को 36 की बेच दो, एंड देन योर $1,000 would be your profit. Hi Epic, how are you? Okay, let me get back to the questions, guys. I know you guys are doing very good. Let's see. Wasim, you have your hand up. Do you have a question? Wasim, do you have a question? You can unmute your mic if you wanna. I don't know if you're here. May I know any update on Lauren? Miss Lauren, where is Miss Lauren? Let me check. Give me 1 second, guys. The link is not linking. Okay. What it is that yeah, I was checking Lauren. I was checking Lauren. I don't know. Lauren is very slow, man. Very slow. Yeah. Hey, Lauren. Yeah, yeah. Hey there. In a meeting, this is a great idea. You like to use our contract? Sure. Please send that over. I'll have the attorney look at ASAP. I'm still waiting for Lauren to respond. Let me text her again. Hope you're doing well. Is there any update on the contract? Question mark.
Okay, let's see if she replies. Yeah, maybe she has a memory issue. I'm fine and committee में आवाज़ नहीं आ रही live. Bro, I sent you a link. अगर आपको Discord से आवाज़ नहीं आ रही, I sent you a link. आप वो ज्वाइन कर लो. लिंक जो है ना Discord की chat में, so you can join. 1200 रेंट हो तो मंथली हाउ मच मेंशन करें. 1200 रेंट से कुछ नहीं होता. बेसिकली होता ये कि परचेज प्राइस कितनी है और डाउन पेमेंट कितनी है, फिर रेंट अगर कम ज़्यादा हो तो फिर देखा जाता है, क्योंकि आपका कैश ऑन कैश जो रिटर्न होता है जिससे आपको पैसे वापस मिलते हैं मंथली, वो फोकस करता है कि आपने कितने पैसे डाउन पेमेंट में डालें. अगर ज़्यादा पैसे डाउन पेमेंट डालें और आपका रेंट कम है, देन द कैश ऑन कैश वेरी लो, राइट. अगर डाउन पेमेंट कम है और रेंट हाई है, आपका कैश ऑन कैश बहुत अच्छा रहेगा. ओके. Got it. Yeah. Okay, so we were looking at this property. I feel like I want to call this. What's wrong with this property? 1500. It's a great cash on cash return. David. Okay, well, I'll take questions first, guys. I feel like you guys are. If I have to go somewhere and then I'm not gone through all the questions, then you guys are gonna be mad. Okay. Okay, let me see. The first message I see is Hamad's. Offered final 55K, but um, agent saying regarding pricing, if the buyer side is not covered the commission structure, the seller would only consider moving forward with 65,000 minimum under the current terms. My apologies, looks like the picture did not go through. What's the property address? 5565 Ring Road. 5565 Ring, Ring Ridge Road. Okay. Yeah, I mean, it's ये आसान नहीं है. जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप समझ नहीं पाएंगे. मेरी बायो में लिंक है, उसमें दो वीडियोस हैं, एक कैश ऑफर की और एक सेल्फ फाइनेंस की. आपने वो देखनी होगी. देन यू विल अंडरस्टैंड. इट्स अ लॉन्ग वीडियो. आई एम पेइंग रुपीज 1200 as rent and I'm paying rupees 1900 as the monthly payment. Not rupees, is probably dollars, but yeah, 12. Yeah, this probably wouldn't work. अगर रेंट आपका पेमेंट से ज़्यादा है, देन आपको पैसे जेब से देने पड़ेंगे, और हाँ, कोई भी इन्वेस्टर नहीं करेगा वो काम. तो रेंट आपका 900 है और आपकी मंथली पेमेंट 1100 है या 1200 है, देन इट्स अ गुड रिटर्न. बट अभी ऑपोजिट है. 23,000. या मैन द प्रॉब्लम इसकी जो है ना, हम आज पहली बात तो ये 2 बेड 1 बात है, राइट. एक तो ये इसमें अ बिट ऑफ नेगेटिव कंसर्न है, मगर इसका जो स्क्वायर फुट है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको एक और बेडरूम इसमें बना दो, राइट. इसमें गुंजाइश है एक और बेडरूम की, बट अगेन दैट्स गोना कॉस्ट अ लॉट एंड ओनर्स नॉट गोना ब्रिंग डाउन. ठीक है, तो ये मसला है. और 65 पे वो मिनिमम बोल रहा है. प्रॉपर्टी से each unit has 2 bedroom 1 bathroom. Oh, oh, that's different then. फिर ये तो बोल रहा है सिंगल फैमिली Zillow. The property is a duplex. Each unit has 2 bedrooms and 1 bathroom.
In some case, third-party website pulls data incorrectly, which may explain the different information shown online. Okay, okay. Well, that's good then. Then it's definitely doable. The issue is, the only issue is not on market, so we need to figure out. Yeah, it's okay. I probably wouldn't download the pictures. But let me look into the comps. We have to fix the comps, guys. अगर comps हमें मिलते हैं जैसे अच्छे खासे, then we can try. But okay. Okay, so the property is right here. जो के सबसे बड़े वाले में है. Let me see. So this is our city. Let me check. So our property is somewhere here. Let's see. Burton Milford, and Chicago Road. This is Chicago. Um, all right, so our property is somewhere in this column, in this V. If you look at this V, right, in this V and somewhere here exactly, I think this is our property. Okay, so what we're going to do is we are going to draw the circle. हमने basically circle draw करना है और अपनी property को बीच में रखना है, ठीक है, ताकि हमें इसके comps के आसपास के मिले. For that I'm gonna take this. Not a good drawing, but this is how it goes. हमारी property यहाँ पे कहीं है, ठीक है. तो अब मैं जाऊँगा for sold. Property type change करेंगे. हमारा क्या है, multifamily है. I think that there are not many multifamily in Detroit. That's a problem. हाउस बोल रहा है सिर्फ एक ही सेल हुआ है पिछले कितने महीने में, 12 महीने में. तो हाउस तो एक ही सेल हुआ है वहाँ पे, which is quite concerning कि क्यों घर सेल नहीं हुए, इतने यार लगे नहीं हैं. But the most expensive one is 116. Okay. हमारे पास 116 का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव घर दिख रहा है. अगर हम वो वाला भी लेते हैं तो हमें अब कैलकुलेटर निकालना है और देखना है, ठीक है. 116 हमारी टोटल बिकेगा, ठीक है. उसमें से कितना वापस करना है, क्योंकि सेलर ने बोला है वो ओके. सेलर कितना बोल रहा है, पिक्चर्स थिंक अवेलेबल 65. ओके, सेलर बोल रहा है 65,000. ओके, आफ्टर रिपेयर वैल्यू सबसे एक्सपेंसिव घर की ये आ रही है, ठीक है. -65,000 कर दिया जो हमने इसको पे करना है, ठीक है. फिर हम माइनस करेंगे क्लोजिंग कॉस्ट, ओरिजिनेशन फीस अबाउट 10,000.
Closing costs of about 2,000, origination fees about 3-4,000, will be 10,000. And then we're gonna minus like agent commission. So let's say if it's 5%, about 5,000 there. Okay, now we have to minus the rehab cost. Okay, um, I don't know what rehab cost look like because मैंने picture नहीं देखी, because I don't want to download the picture, but I will do it for now. Okay, let's see the pictures. तो घर की pictures ये है. So the window is boarded, concrete basement, kitchen needs work. Yeah, it's gonna be rehab property. Um, it definitely be rehab. We have to fix the property. It's not like completely new, fixed up. Yeah, so probably 20,000 minimum I'm looking at, and I got 20,000 minimum looking at, then you're only left with 16,000. 16,000 आपका प्रॉफिट होगा इस प्रॉपर्टी पे. ठीक है, अब ये 16,000 हमें देखने के लिए बहुत लगता है, बट टेक्निकली कोई भी इन्वेस्टर्स को बाई नहीं करेगा 16,000 के प्रॉफिट के साथ. रीज़न बीइंग कि आप बहुत क्लोज हो, राइट. अगर कंस्ट्रक्शन में पानी भर गया या जो आपका टॉयलेट होता है वो क्लॉग्ड हो गया, तो 3-4 हज़ार तो आपके वो चलेगा, राइट. प्लस हमने अभी पेंट की भी, अगर पेंट वगैरह भी करना है या कारपेट रिमूव कराना है या बैकयार्ड में कुछ काम होता है, देन यू आर गॉन, राइट. देन आपके पास कोई बचेगा नहीं, 10,000 से भी कम पैसे बचेंगे. और इतना सारा रिस्क लेना मेक सेंस नहीं करता इन्वेस्टर को. ठीक है, यूजुअली इन्वेस्टर चाहता है कि मेरे कम से कम 35,000 बने ऑन अ फ्लिप. ठीक है, 35,000, 35,000 प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, एजेंट फीस निकल गई, सारे सब कुछ निकालने के बाद 35,000 बचे. मगर यूजली 35,000 बचने का तो सोचता है, पर वो होता ऐसा नहीं है. यूजली वो कम डाउन हो जाएगा अराउंड 20-25, क्योंकि 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हमेशा आ ही जाता है, राइट. तो अगर वो 35 का सोचता है तो उसके पास टेक्निकली बचते हैं 25. ठीक है. It does require some repairs. We recommend scheduling a showing so you can access the current condition and run your numbers accordingly. Um, yeah, I mean, I took a number. मैंने conservative number लिया 20,000 का. I don't think it's gonna worth it. Zillow जो बोल रहा है वो तो Zillow तो बहुत ही कम बोल रहा है, 29,000, 23,000 बोल रहा है. The other thing also I want to look at is the property. ठीक है, 2 दरवाजे, it's a duplex, it's a brick build. ठीक है, so it's not a bad thing. See, ये जा रही है मेन रोड. Let me see something having issues. So yeah, I think we would need to come down quite a bit. We would need to come down quite a bit on this property, because looking at the comps, the most expensive is 116 or 116 wali property. Um, it's a single family home, but almost the same size, same type, like a brick build, sidings. Let me see, what is this? Yeah, let me go bigger a little bit. Okay, so let's see if you have more comms here.
87, 83, 50, 115. Yeah, again, guys, 115 is the most expensive house. 116. He's selling for 64. Even if you put 30,000 down, 64, 74, 84, 94. You're done. You're done. You need this house at a very, very low for this to work. Look at the houses prices, guys. आपको 80,000 का घर मिल रहा है, 35,000 का घर मिल रहा है. घर मिल नहीं रहा, ये मिल चुका है किसी को. Right? It's sold for 35. और look at the घर की हालत अंदर से बिल्कुल नया है. Right? अगर वो $35,000 का घर सेल हुआ है और अंदर से बिल्कुल नया है, then how can we buy 65,000 जिसमें काम भी है? So that's an issue. Look at that $18,000 house. It looks pretty good, but $18,000, 3 bed, 1 bath. That's crazy. One second. So who's we were looking at? Hamad, yeah. Hamad, I think it's going to be very tough sell. He's देखिए जब प्रॉपर्टी मार्केट पे नहीं होती ना, तो दो तरीके से लोग उसको डील करते हैं. डील से मुराद बेचते हैं. एक ये कि उनको पता होता है कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं है, तो वो मार्केट पे नहीं जाएंगे. ठीक है, बगैर मार्केट पे गए हुए वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको पता है कि वो मार्केट पे जाते हैं, वो कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं और वो सेल नहीं होती 50 दिन में, तो उनको प्रॉपर्टी की प्राइस लाजमी लानी है नीचे, और वो लाना चाह नहीं रहे, तो वो दिखाते हैं. या वो ये करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को सेल करें ये दिखा के कि ये ऑफ मार्केट है. ठीक है, तो आप ले लो उसको, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आ रहे, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को मैंने बताया नहीं मैं मार्केट पे जाने वाला हूँ, ये प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी. फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, वो उस पे भी सेल करता है. Okay, so I think if he's asking 84,000, he's out of his mind. 84,000 for a duplex could make sense. ठीक है, अगर duplex आपका 2 bed 1 bath का है, तो it could make sense. But it has to be the brand new duplex. ठीक है, अगर 84 को हम डिवाइड बाई 2 करें तो 42 बनेगा. राइट, 42,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नया घर मिल रहा है 30,000 का. 30,000 35,000 का हमने नया घर देखा है, तो इसका मतलब 42,000 पे दाल गल सकती है. राइट, पर साइड. राइट, तो 42,000 could make sense, मगर द घर को टिप टॉप कंडीशन में होना है तब. राइट, जबकि वो नहीं है. तो यू हैव टू ब्रिंग हिम डाउन. अगर वो 84,000 मांग रहा है तो 0.6 आपको करना पड़ेगा. 84, yeah, something around 50,000 would be where we at. 50,000 में 25,000 एक उसके, 25,000 उस एक के, and then we will have to um, work on the rehab cost. But दूसरा मसला है कि डिट्रॉइट में जो वो बहुत कम है आपके ड्यूप्लेक्स बहुत ही ज़्यादा कम है. सो दैट्स आल्सो अ बिग प्रॉब्लम कि किस तरह उसको करें. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड वन मोर ड्यूप्लेक्स क्लोज बाय. आप उससे पूछो कि जो भी बंदा आपसे बात करे ना, उससे पूछो कि गिव मी द कॉम्प्स, सेंड मी द कंपैरेबल्स, send me the comparables of this property. Okay, Hamza, you might be unmuted. Okay, so comparables you have to check. और से बोलो कंपेरिजन मुझे भेजे.
और मुझे बताए कि आपने 84,000 की जो प्राइस लगाई है वो वाकई में 84,000 है या नहीं. Okay, and then we go from there. There's no comps for this property basically. Okay, let me go to the next person. Please check inbox. Yes, I will. She has memory issues. Fahim, I'll look at yours if you have sent me a message. Sir, इसको call कर लें, interested in this offer and wanted a contact number. So this is the property, 64 days. हमने इसको ऑफर करी है 219. 240, 24 down. He's representative. इसका reply आता है, he is seller is interested in the offer, but I would like to talk to you about few changes we would need. Do you have a contact number, agent number, and call? Okay. Let's call Colin. Colin को बात करनी है फ़ोन पे. फ़हीम, मैं आप बन के बात करूं या फिर आपने बोला कि मैनेजर कॉल करेगा? Let me know. मैंने कुछ नहीं कहा, आप मैनेजर बनकर बात कर लें. ओके. Okay, so this is the property, the offer. Okay, I like that you send me a picture of the numbers as well, right? It's very good because मुझे पता I can see the numbers को call करते हुए. So 24,000, 240 payments, 17 cash and cash. Is it the property rented right now? Property taxes काफ़ी ज़्यादा होते हैं, but yeah. Okay, let's call this guy and see what he want to do, sir. Colin. Hey, is it Colin? Yeah. Hey, Colin, this is Sayed. We've been working with Fahim. You've been chatting with Fahim on the property on Mayfair, San Antonio. Yes, sir. Yeah, we were running some number, and I think we have sent kind of the initial offer with the rough numbers to you. You mentioned that you want to have a quick chat to discuss a few things. Yeah, are you familiar with sub twos? Yeah, yeah. Okay, so this one is a sub two. Okay. He owns it as a sub two. Oh, he owned it as a sub two. He owns it currently as a sub two. So what's the loans then on that? What's a sub two loan? 175, roughly 175 is what's still owed on it, and the payment's roughly $1,500 a month. So what I was doing is I was going to come back to you and see if y'all could do 50 down, and then we'll just push the sub two over to you. I see. Is it currently rented? It can be rented, yes. But it's not rented at the moment? It's not rented at the moment. It is Okay. vacant. So 175, you just want the down payment of, is it 50? Yeah, I want to see if we can get to 50. What's the interest rate on this? Oh, shit. Hold on a second. Hopefully it's in threes. That would be perfect. I don't know if it's that low, but if you give me a minute, I'll tell you. Sure. Interest rate, yeah, 3.875. Okay, that's good. Total balance is 175,809, and that's as of 3/16. And they're selling for 219. Okay.
how we did it before, we ran a seller finance numbers on it, but I can run numbers on sub too. I can come back to you on that. Um, if I'm not able to, because I need to run the numbers in terms of the rent, right? If I'm not able to bring in all the down payment, would seller be open to, like let's say if I bring 24,000 down, the 10%, and the rest of let's say 25,000 in payments plan. Possibly. Just let me know how you want to structure it because Yeah. it's really going to depend on how you structure it. Yeah, it's probably not be a big monthly income because again I have to have cash flow and then the sub two loan and then to the Mr. Seller. So I'm going to be pretty tight on the cash flow on this one, but I can run the numbers and kind of get back to you what that looks like. Yeah. All right. Yeah. Okay. Let me know. All right, I'll shoot you a text. Okay. Talk soon. Thanks. Bye. Okay, so he wants to. So he's saying this property is sub two. Okay, इसका मतलब है कि इसने किसी से सब टू का लोन लिया हुआ है. सब टू का मतलब है कि किसी से इसने प्रॉपर्टी लिए और उसके मॉर्गेज को टेक ओवर किया हुआ है. ठीक है. आई डोंट नो कि कब इसने लिया. लेट्स सी. सोल्ड 74,000 and then 2021 118 listed for sale. Okay, तो 2021 में इसने ख़रीदा था और ये लिस्टेड सेल 2026 में कर रहा है. इसको इक्विटी नहीं चाहिए घर में से और वो बोल रहा है सब टू है. ठीक है. अब हमें नंबर सब टू में करने पड़ेंगे, बट ये बोल रहा है कि मुझे 50,000 ला के दो और हमने जो नंबर रन करे हैं उसको भेजे थे वो 24,000 के थे. ठीक है. मसला ये है कि इसमें जो मंथली पेमेंट है. Did he tell me the monthly payment? Shit, I forgot to ask him. Yeah, I forgot to ask the monthly payment. 3.9% is a good interest. I like that. What he owed, मतलब 175,000 owe करता है. It doesn't matter to me what he owed, right? क्योंकि 3.9 interest है. मुझे बस ये पता करना है कि monthly payment कितनी है. अगर monthly payment let's say I don't know 500 है, then we could do something. और rent कितना है, right? 3/3 है तो yeah, we need to know the monthly payment. फ़हीम, आपको पता है मंथली पेमेंट सी क्या है? या रेंट जो आपने निकाले ये बाकी वाले निकालें या फिर आपने वैसे ही देखा था? पेमेंट इज इन शॉर्ट इज 1600. 1600 payment है. That would be tough, man. या तो हम उसको बोलेंगे इसको हम होलसेल करेंगे, हम खुद नहीं लेंगे, इसको आगे बेचेंगे और 3.2 वाले इंटरेस्ट पे फोकस करके इसको सेल करते हैं एज ए जो बंदा रहना चाह रहा है इन्वेस्टर के अलावा, राइट. और जो बंदा आएगा उसको बोलेंगे कि आपको 25,000 डालने. या बट he needs to come down. I can only do 25,000. या क्योंकि अगर कोई नया बंदा आता है जैसे जो रहेगा अंदर आके, उसके लिए भी 24,000 ज़्यादा बहुत कम पैसे नहीं है, राइट. 24,000 इज़ अ गुड अमाउंट. प्लस उसको आप बोलो कि आप एजेंट कमीशन भी पूरा करोगे और क्लोजिंग कॉस्ट भी पूरा करोगे. इट वुड बी टफ फॉर हिम. तो 25 आई थिंक वुड बी द बेस्ट. बाकी 25 अगर उसको चाहिए 25 we can do at the balloon. Yeah, but 1600 is tough. It's very tough. अगर आप रेंट देखें, रेंट ही 1500 है.
तो इसका मतलब आप आप $100 तो वैसे ही लूज़ कर रहे हैं बगैर कोई कैलकुलेशन के, बगैर टैक्सेस, इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों के। So this is the tough one. उसका मैसेज आता है, I will confirm the monthly payment, and then we'll just give him, tell him like this would be a wholesale deal for us, and be honest. Not, I mean, it's not that we are lying, but उसको बता दो कि we will try to sell it. It's a wholesale deal for us. We're not going to take it over. So we can go under contract and we can try to market it. उसको market करते हैं और उसको देखते हैं कि it's can it be sold or not. Property is in good condition. Someone did a good job, but इसमें मतलब ये रेंट भी नहीं करी हुई, रेंट कर रही होती तो चलो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता। Okay, yeah, I think what we have to do here is 24 would be the max we can do in terms of down payment, or else nobody was going to buy it from us. 3.9, whatever the interest is good. I like that. Let me send you these details so that I don't forget it. Give me 1 second. Just type it down. Okay. Okay, so the loan is 175.09. Interest is 3.6. Payment is 1,600. Okay. Okay, let me look at the other one. Okay, so this is the next property, Red Brick. I do not see the attached. Faisal, I don't know if you're here. I do not see an attached with. उसको आपको basically 1 second. Okay, I'll read your comments. I do not see an attachment. 132 yes. अगर 132 की लगी हुई प्रॉपर्टी तो वो 92,000 की बन जाएगी at 70. Did you listen to us too? Yes, I do listen to us. I read the comments in YouTube but not on TikTok. वो बोल रहा है कि आप उसको बैंक अकाउंट दिखाओ कि आपके पास इतने पैसे हैं जितने आप बोल रहे हो, वो जो कि $92,400 है। वो बेसिकली आपको प्रूफ ऑफ फंड्स मांग रहे हैं कि आपने जो ऑफ़र करी है उसकी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके पास वाकई में इतने पैसे हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारे पास और प्रॉपर्टी है कोलंबस की। देयर इज़ अनदर पोर्टफोलियो आई कैन सेंड सेल्फ फाइनेंस 175 की है, हमने उसको 192 बोला है, 19,000 की डाउन पेमेंट के साथ। He replies, I will present it to offer. Seller will need a phone number or business information.
श्योर, उसको कॉल करते हैं। इसको कॉल करके पूछते हैं कि भाई सेलर को प्रेजेंट करा या नहीं करा। यार एक तो इनका नंबर क्यों नहीं होता। फ़हीम, आपके पास नंबर है इसका, इस प्रॉपर्टी के एजेंट का? Any update on Aaron Michael? Not sure. I'll check when I get to you. Okay. जी शेयर क्या हुआ है? कहाँ पे? शेयर कॉलन का है मेरे पास, बट उसके नीचे आपने लिखा हुआ है हेयर इज द अनदर पोर्टफोलियो आई कैन सेंड, वो वॉल्टर का है, और दोनों में से कोई भी कीशा का नंबर नहीं है। कीशा का नंबर नहीं है, बट आई कैन ट्राई टू फाइंड इट। कीशा क्लेट, I'm not sure how I can find her number. Keisha LC, could be this. This is Keisha. Maybe this is Keisha. Okay, I'm gonna call Keisha and tell her like what number she's talking about. The number you are trying to call is busy. Please try again later. I'm gonna call again. The number you are trying to call is busy. Please try again later. How is the phone numbers can be busy? That's not true. There's something wrong. Oh, ये तो उसने लिखा हुआ है वैसे तो. It says listed, guys. This is the property she has. But I'm not sure why her number is bad. Yeah, I don't know why the number is not quite working for her. I think this is the number I got. No. Thank you for calling Sanders Real Estate. If you are a homeowner interested in selling your home, press 1. If you are a buyer inquiring about a home for sale, press 2. If you are an agent interested in joining Sanders Real Sanders Real Estate. I help you. Hi, I'm looking to speak to Keisha Elliott. Okay, give me 1 moment, see if she's available. Sure, thank you. Oh, real quick, so I know how to introduce you. Can I ask your name? Syed, SYED. And is this calling about a property That's correct. she has listed? Blen Street. Okay, and then are you an agent or a interested buyer? Interested buyer. Okay, give me 1 second. And are you represented by an agent at all or no? No. Okay, give me 1 moment. Let me see if she's available, okay? Sure, thank you.
मसला ये कि ये तो कंपनी का नंबर है ना, इस पे हम टैक्स नहीं कर सकते. Oh, we have multiple Keishas actually. Which Keisha did you say again? I'm sorry. Keisha Elliott. Keisha L. Okay, give me one more second. Sure. I have her direct number, but for some reason it's not working. Yes. All right, Keisha's phone is going straight to voicemail, which tells me she's either on the other line with another client or in a meeting or something. Right. If you're interested in trying to set up a showing, I could also get you just with another one of our showing agents. They'll be able to take you to the property and get any questions you have answered in the meantime. Is that something you'd be interested in? I'm actually out of state investor. I have been chatting with her over the email for a while. So we kind of wanted to run the numbers with her. She mentioned something about the seller and asked her to give a call. So I did try to call on a personal number, but it was going straight to busy. So I thought I'll give you guys a Gotcha, call. yeah. Yeah, that's what I'm getting to. It's going straight to voicemail, so Okay. that probably means she has got it on Do Not Disturb or something. Right. She must be in a meeting right now. Sure. I can tag her here in our system and have her give you a call back, okay? That would be wonderful. Thank you so much. All right, thank you, Syed. Sorry I couldn't help anymore. No worries. Take care. All right, bye. अब कीशा का जो अपना नंबर है, it's busy and she's not picking the call. We cannot leave a message. But yeah, we just have to pray when she called, I would remember it's a Keisha's number. Or what I can do is I can इसका जो पुराना वाला नंबर है ना, जो busy जा रहा है. Let's try one more time. The number you are trying to call is busy. भले आप दूसरी लाइन पे हो, बिजी तो नहीं बोलता इस तरह का वो, अनलेस कि ये लैंडलाइन है. बट ईशा ओके, बेसिकली आप उसको ईमेल कर दो और उसको बोलो कि आई ट्राई टू कॉल यू 2 times एंड देन देयर वाज इट कीप सेइंग बिजी. मैंने आपकी कंपनी से भी बात किया था, उसने भी ट्राई करी थी. ही सेड इट्स यू आर बिजी एज वेल. Okay, so the issue is the busy part. Copy link. Okay, this here is another portfolio I sent him. Seller Finance, can you please call? He wants to call. What is the Seller Finance offer you sent? Okay, I'm just looking at the Excel sheet you sent. Let me change this stream. Okay, तो ये है आपकी numbers. Okay, तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो है. एड्रेसेस यहाँ पर हैं, रेंट और नेट ऑपरेटिंग इनकम 23, 24, 25. सो 23 में 3,000 बनाए, 24 में उसने 9,000 लूज़ करे और 25 में 9,000 लूज़ करे. This is 48, 48, 114, 110, 125. Renovated 2023, 2024. Okay, let's see if कि इसमें कितना काम है, right? सिर्फ एक चीज़ हमें पता करना है अब, basically now
कि कितना काम है इस प्रॉपर्टी में. I don't know if I can figure out the address. Fahim, this is all Columbus, Ohio properties? Is it all Columbus, Ohio properties? Okay, the numbers looks okay. अच्छा, ये जो एक्सेल शीट है आपको एजेंट ने भेजी या आपने खुद बनाई है इसको? Because अगर एजेंट ने भेजी then I can ask what it means, the loss and all that. Agent ने send किया, okay, then it's fine. Then we can call. What's the number of the agent? Where's the number? Right here. Okay. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Looking to speak on the portfolio. Jefferson portfolio. Let's double dial. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Looking to speak on Stephenson portfolio properties. Thanks, Stevenson. Please stay on the line. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Hey there, this is Fahim. I was giving you a... What is going on today? Let's send him a message. Hey Walter, hope you're doing well. Was giving you a quick call about the Stephenson portfolios property. You requested a call to further discuss the portfolio. Let me know when you have a quick minute to chat. Thanks.
Vincent Port. And then we'll see. So this one is done. This one is done. This one is from yesterday. And this one is done. Okay. I think you're all set. I'll move on to the next person. Okay. Let's see who's the next person. Sayed, any update on Aaron and Michael? Yes, let me check Aaron and Michael. AR. No, Newton Street, right? No, not so far. Let me check when we sent the email. Gmail. Please call. Who? Abuzer, call who? Phone one. Heather, what was the Newton Street property again? Like it's a story. I'm just gonna check real quick. I'm pretty sure it was the clinic type thing, or it was like a pet friendly something. Let's go 511. Yeah, I'm pretty sure it's a pet clinic, right? Yeah, this one we have chatted on my team. Someone in my financial team talked to them. Let me check the one. Yeah, this was the second position. We contacted the bank and tried to get an approval on the second position loan, but we didn't get approved for this. He was asking, I think, I'm pretty sure it was about 50%. He wanted to have. Yeah, he wanted to have 50%. I remember. Oh wait, no screen. 1 second. There. Okay. Yeah, I remember this is the 50% one, and in my note it said that we didn't get approved for this loan for second position. The problem with this, the problem bank had is this that the property is not 1.2 million. So बैंक को फिर अपना बेसिकली वो करेंगे ये कि वो अपना बंदा भेजेंगे बैंक वाले और प्रॉपर्टी को खुद देखेंगे और बताएंगे कितनी प्राइस है उसकी, right? But let me check. I can run the numbers again on this for the second position. I don't know. मेरे ख्याल में तो बैंक को मना नहीं करना चाहिए. Usually these properties are not bad. Stream. Okay, so let's quickly run the numbers, guys. Again, this method is the second position, which basically means कि हम finance करेंगे down payment. 1 2 1 2 4 8 6 9 5. 1 2
48,695. Okay, if we come at asking commercial, he wants 50% down, so we gotta do 50 here, and 60 here. Okay. The net operating income is 87,404, 408. 87,408 divided by 12. तो बेसिकली जो नेट इनकम है मैं इसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ. 7284 is our monthly income. Okay, क्योंकि ये नेट इनकम है, then I have to do everything zero here. ठीक है, zero. Okay. So far good. Something is in green. That's a good sign. हमने रेंट देख लिया. डाउन पेमेंट इसको 50,000 की दे दी और 50% की दे दी और रेंट हमने डाल दिया. ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको पेमेंट कितनी देनी है. सेलर कैरी जो कर रहा है वो कर रहा है $672, $372. नाउ अब आप खुद सोचो, आपके पास 1.2 मिलियन की प्रॉपर्टी है. आप किसी को बोलते हो कि 50% मुझे अभी देते हो, वो 50% आपको अभी दे देता है और बाकी की जो 50% है वो छोटी सी पेमेंट ऑफ 37200 पर मंथ देता है. That's where the issue is, guys. That's where the bank is like no. तो इसका मतलब है कि हमें इसकी आस्किंग प्राइस से काफ़ी नीचे आना पड़ेगा और फिर let's do 1.2 million. 1.15. Even then it's not making sense, not even going in green no matter what I do. So we can do down payment of 1.15. I mean, let me actually go with what he's asking. Okay, payment has to be very low, 40 years. Amortization, क्योंकि पेमेंट इतनी लो है हमें कैश फ्लो ज़्यादा करने के लिए, अब amortization is gonna be like hella long, like a 9 years minimum. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 10 साल का. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, इसको ऑफर देंगे 10 years की. I'm not sure why the bank disapproved this because there is a bit of a cash flow. You can figure this out. Yeah, everything looks good. अगर हम इसको 65 करते हैं और बायर को पैसे देते हैं इसको लेने के, then we will be in negative. That could be the issue, maybe. I don't know. I don't know. Yeah, basically हैदर मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ. आपने इसको ऑफर दी हुई है इसकी? प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि हमने नंबर ही नहीं देखे इसके अभी तक. I was not able to understand the distribution. Sitting fit no screen. I checked my email with him. He did not say 50%. You ask him, we can do a big down, and he said to him, you will send a lot of detail. Okay, if he didn't ask for 50%, then we can come down. Okay, that could be something good we can do. So let's say we make him carry 30%. Sorry, he carried we give him 30% down payment and bring it down to 50. 45 I think would be best. Yeah, I think 45 would be good. The seller carry is $520 per month with a 30% down payment. Okay, बायर जो बाय करेगा उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका कैश फ्लो अच्छा है और सेलर को डाउन पेमेंट मिल रही है. Okay, I'll send it for approval this time.
अगर इससे 50% नहीं बोला, then I don't think why would bank decline this loan. I have no idea, bro. There's something wrong here, maybe. Okay, forget about it. Let me run this again with my team. Maybe they did a mistake. I'm gonna send you a screenshot of this, Heather, just in case if we have to come back to this and I forget what's the situation. You can remind me of this. But yeah, I mean, अगर 30% पे वो agree करता है, then we are good. We have no issue. Plus हमारे पास बहुत ज़्यादा room है, right? वो इस वजह से कि ये दोनों green है, ये green है, ये सारी चीज़ें green है और ये green है, right? So we can figure something out, inshallah. So basically, what I need to do, let me put a note again, for my team to chat with this. Blake, we talked about that. Okay. May 8th task. Sent LOI second. Okay, just finishing up the note so that I can send this information over. Copy the image link. Okay, so Heather, for this one, I will chat with the team and see why it was declined and kind of figure out what's happening with this one. Okay, let's go back to the next one. The next one is this property. No screen sharing, probably. It's Friday, guys. Anyone has a plan for weekend? Or who's gonna be sending 10 plus LOIs tomorrow or today? I know I will be. Okay, so this is the deal, not for Newton. It's not this one either. Okay, looks beautiful. Look at this property, guys. Did some great work on that. Countertop is great. Expensive, actually, not just great. Good stuff. Good stuff. Very well done. This could be AI, but whatever. But very well done. The property is good. It's in an amazing condition for you to live in. So seller finance would work just fine. A cash offer of 150 could work just fine too. Okay. I think I've looked into it yesterday, but I did it alone, so I'll do it together. Okay, so purchase price is 203 listed price, and then we add 9%, 10% down. That's good. 30 years amortization. We can fix this part, right? 5,000 rehab is good. Then 10.5, good. Tax and insurance are a little bit. It sounds a little low. Yeah, it is that 227. The problem is the cash flow, right? So
with 30% amortization. Is there a loan? It's a hybrid deal. Okay, I see why it's low. It's hybrid. Okay, the look at the interest, 2.96%. Dang, that's probably the lowest I've seen in a very long time. 2.96%. ये आपके उससे मिला है या फिर आपने उससे पूछा था, एजेंट से पूछा था? Proper. Yeah, I wonder if it's how correct this is, right? How correct this is. Yeah, if it's a hybrid deal with this interest rate, right, with 700 payment, तो बेसिकली अब आप सोचो एज अ फॉर एग्जांपल आप ख़रीदने जा रहे हो रहने के लिए, ठीक है? आप ये घर टेक ओवर करते हो, ये घर मिलता है आपको अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 20,000 का, ठीक है? इसमें 20 लिखा हुआ है, 20,000 का ये घर मिलता है और आपको पेमेंट करनी है मंथली $729 की, 2.6 इंटरेस्ट है और लोन बैलेंस इतना है, राइट? So I don't think it would be a bad deal for someone who is going to live in it. ठीक है? इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर क्या करता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, अगर इन्वेस्टर ये कर सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको 2.96 है, राइट? वो क्या करेगा, इसको 3.96 कर देगा और 1% इंटरेस्ट रेट का जो पेमेंट है ना घर पे वो अपनी जेब में रखेगा। तो बेसिकली एवरी मंथ जो उसको पैसे मिलेंगे वो ओन तो वो बंदा कर रहा है, मगर आपने उसको ज़्यादा पे चार्ज किया हुआ है, तो 2.96 से के इंटरेस्ट से ज़्यादा की जो पेमेंट होगी वो सब इन्वेस्टर के पास जाएगी और 2.96 वाली पेमेंट्स जो होगी वो जाएगी बैंक के पास। तो इसको बोलते हैं रैप करना, कि आपने जो घर को रैप करके दूसरी तरीके से बना के दूसरे को बेच दिया, ठीक है? तो ज़ाहिर है पेमेंट 729 नहीं रहेगी, हो सकता है वो चले जाएँ 850 860 के दरमियान। तो वो जो डिफरेंस होगा आई डोंट नो $100 का या फिर $89 का पर मंथ, वो मिस्टर सेलर को मिलता, मिस्टर बायर को मिलता रहेगा, इन्वेस्टर को, ठीक है? और ये जो पैसे होते हैं वो बहुत इजी पैसे होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर ये डील हम खुद लेते हैं, ठीक है, और इसको हम इस पे इंटरेस्ट रेट 5% लगा कर किसी फैमिली को देते हैं, तो जैसे 200 हमें मिल रहे हैं, तो घर ओन तो वो बंदा कर रहा है, ठीक है, वो पे कर रहा है और घर ओन कर रहा है, मगर हमें सिर्फ इस डील को स्ट्रक्चर करने के 200 पर मंथ मिल रहा है, राइट? बट अगेन इट्स एन इंटरेस्ट, सो इट्स नॉट गोना बी समथिंग हलाल. Sorry, agent confirmed the loan data. Okay, that's good. If the agent confirmed the loan data, then it's great. आप उसको ऑफर ये भेजो, आपने उसको ऑफर भेजी है अभी तक? No, okay. Yeah, आप उसको इसकी ऑफर भेज दो. I think everything is good here. I don't think there's any issue in this. ठीक है, आपका कैश इन कैश फ्लो बहुत लो है, दैट्स फाइन, मगर ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट अच्छा है, तो इसका अगर किसी को कैश फ्लो पे नहीं फोकस करना तो वो इस पे फोकस करेगा, इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है? और या मंथली पेमेंट 127 आप उसकी दे रहे हो, किसकी? लोन बैलेंस डिवाइडेड बाय दिस, राइट? इसकी लोन बैलेंस, बट 7 years पे बोल रहा है इक्विटी आपकी लो होगी. I don't know if I can edit it. I can't edit. Yeah, go with 8-year balloon, 8-year balloon for this, and send him the numbers. ठीक है, उसको आपने बोलना है कि मैं बैंक को पे करूँगा 729, सेलर को पे करूँगा 127, ठीक है? डाउन पेमेंट मैं आपको दूंगा 22,000, इसमें एजेंट कमीशन भी इंक्लूड होगा, और क्लोजिंग कॉस्ट का आप अभी आप कार्ड यूज़ नहीं करना, उसको आप बाद में यूज़ कर लेना, बट क्लोजिंग कॉस्ट का भी हम बता सकते हैं. यस, वी आर मेकिंग द पेमेंट, राइट? इक्विटी की पेमेंट है तो हम उसकी पेमेंट बना भी रहे हैं 127 की पर मंथ. Yes, Hamza, I will check your deal in a second, okay?
or give you an update. Please write it. Sure, I'll send you a message. Let's do it here. So PP purchase price is gonna be, but wait, we are actually giving him over asking too. We can't do that in a hybrid deal now because the cash flow is very minimal. Yeah, so start with listed price. 2030 TP. Down payment 22,000. Sorry, 20,000. Numbers might change it, but that should be the good offer. Bank payment 729 per month. Seller payment 127 per month. But the house is in beautiful condition. ये ऐसा घर है बेसिकली कि आप कोई भी बंदा मतलब जो घर में रहना चाह रहा है वो रह सकता है. इन्होंने घर जानबूझ के इस तरीके का बनाया है कि ये इन्वेस्टर के लिए नहीं हो, ये उन लोगों के लिए हो जो रहना चाह रहे हैं, राइट. तो इसमें एक्सपेंसिव चीज़ें डाली हैं, जैसे ये काउंटर टॉप इज़ एक्सपेंसिव. आप कोई भी काउंटर टॉप डाल सकते थे, राइट. तो ये वैसे भी अगर हम इसको रैप करके भेजें तो बहुत ज़्यादा इजी होगा इसको सेल करना, क्योंकि ये बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में, इट्स अ ग्रेट कंडीशन, ग्रेट एवरीथिंग, बैकयार्ड. और इसको वो बंदा जो रहना चाह रहा है घर में आराम से इसको ले सकता है, ठीक है. सो दिस कुड बी अ गुड डील इन दैट सेंस. So let me send you the numbers. Okay, but yeah, it's a good deal overall, a good house as well. I like it. Number 4, spreadsheet viewer there. Number 3. Okay. So duplex. Note the agent shared the inspection report. I want to know what can I offer. Agent inspection report share करिए. Guys, I don't know if you guys know, this is the inspection report. This is how it looks like. Look at how much details it has, right? एक चीज़, panel, electrical, everything. This is how inspections are done. This is why it's very expensive for us to get the inspection done. वो उसने हर एक चीज़ की पिक्चर भेजी है. नीचे से पिक्चर, घर में ये मसला है, ऊपर से घर में मसला है, साइडिंग में, दरवाजे में, बेसमेंट में, एक चीज़ की आप देख सकते हैं, इतनी डिटेल है. So look at this. It's 65 pages for one property. You understand? तो पहली बात ये कि इस रिपोर्ट में बनने में टाइम लगता है, राइट, क्योंकि इंस्पेक्टर जाके इंस्पेक्ट करता है हर एक चीज़. उसके पास लाइट्स होती हैं, हीट गन्स होती हैं, ये रही हीट गन, और उसके पास पता नहीं रेडियो वेव भी होती है कि कोई वाटर लीक तो नहीं हो रहा जिसकी आवाज़ नहीं आ रही हो. Literally everything. Now I'm not an inspector, so I don't know if I can read this property properly, but I can think it as a flip, right? अब इस घर की प्रॉपर्टी है, सॉरी इस घर की इंस्पेक्शन. लुक एट दिस हाउस, राइट. सामने से लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं है इसमें, तो भाई लोग रह रहे थे, एवरीथिंग लुक्स गुड, डिसेंट, क्लीन है, लिवेबल तो नहीं है बट स्टिल अ फेयरली क्लीन प्रॉपर्टी है, ठीक है. बट ऐसा है नहीं.
Incredible property for Cleveland. The value add investment features 2 bedroom, 1 bath unit occupied, 550 and 650. No, अगर आप इसको ऐड करें $550 प्लस 650, राइट, तो 1200 बन रहे, और प्रॉपर्टी की जो परचेज प्राइस है इज़ $199,000. ओके, दैट्स इशू अगेन. हमको अगर क्विक हमने कन्वर्जेशन करनी है कि कितना कैश एंड कैश अच्छा है या इस पे नहीं है, बहुत इजी तरीका है. आपने इसका 1% निकालना है, ठीक है. 1% इस नंबर का होगा 2 डेसिमल पॉइंट 1 2, ठीक है. इसको आप भूल जाओ, जो सिलेक्ट है ना इसको भूल जाओ. तो $1,990 शुड बी द 1%, और इसका जो रेंट आ रहा है वो 1200 आ रहा है. अब और ये बोल रहा है कि प्रोजेक्टेड मार्केट रेंट्स जो हैं 1000 फॉर 2 bedroom एंड 8 फॉर 1 bedroom. तो 1800 बोल रहा है प्रोजेक्टेड रेंट्स हैं. जब आप इनको निकालोगे, फिक्स करोगे प्रॉपर्टी और फिर दोबारा डालोगे, तो वो बनेगा 1800. फिर भी हम 1900 के क्लोज नहीं जा रहे, राइट. So that's where the issue is. And the property is 331 days, no price cut. He's stupid. Yeah. Esper, definitely look at that. How when he's trying to sell, oh my god. 2025. Che. Wow. So it's almost a year now, right? So yeah, it's almost a year, guys. So there's something wrong. कि inspection की report में जो चीज़ें होंगी is probably pretty big. So इसका मतलब है कि हमें summary. I don't know. It's gonna take me so long to just read this. I feel like give it to ChatGPT. Minor fixes, significance, full evaluation recommended. The several noted retention, active leaks were present in the attic and interior spaces. So roof में तो leak है भाई. That's a big expense. Wow. Yeah, it's if roof में leak है, that means आप easily $10,000 to $15,000 कहीं नहीं गए. आपने इसको ऑफर दिए अभी तक? ऑफर नहीं दिया कि मेरे ख्याल से जब भी आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजी है मुझे. एंड नहीं दी. एंड से इक्विटी तो 25% नहीं होगी एट द एंड ऑफ 8 years. इक्विटी इन रेड, या इक्विटी भले नहीं हो उसका मसला नहीं है, क्योंकि हमें रीफाइनेंस कराना ही नहीं है ना यहाँ पे. क्योंकि जो बंदा आ रहा है वो बंदा आके रहेगा वहाँ पे, राइट. ये इन्वेस्टर को तो नहीं दे रहे ना, मतलब कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हमें रीफाइनेंस करने की ज़रूरत पड़े. कैश फ्लो तो उसमें है ही नहीं ना, तो उसको बस ऐसे ही बेचना है उठाकर, बस उस पर इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ा के बेचना है जिसको भी बेचना है. तो उसमें अब उसके पास 20 साल की प्रॉपर्टी है, 30 साल की प्रॉपर्टी रखता है, डजेंट मैटर, बस हमें वो पैसे मिलते जाएंगे उसके. ओके, हमें रीफाइनेंस नहीं कराना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी तो है नहीं टेक्निकली प्रॉपर्टी, क्योंकि हम आगे बेच रहे हैं. मतलब इन्वेस्टर नहीं रख रहा, इन्वेस्टर आगे बेच रहा है उसको रैप करके, ठीक है. तो उसका तो इतना मसला नहीं है. देखो, इक्विटी सब टू में और हाइब्रिड में भी इक्विटी मैटर नहीं करती. इक्विटी देखो, इक्विटी मैटर करती है तभी हम डिसाइड करते हैं कि वो जाएगी सब टू में या वो जाएगी हाइब्रिड में. सब टू या मॉर्गेज टेक ओवर में जाएगी या हाइब्रिड में जाएगी. हाइब्रिड में इक्विटी है तो हाइब्रिड में जाएगी. सब टू में इक्विटी नहीं है तो हम $0 पे देंगे या बहुत कम पैसों पे.
इक्विटी एट द बलून अगर आप पूछ रहे हो तो वो फिर इतनी मैटर नहीं करती, इस वजह से कि आप उसके साथ कर क्या रहे हो। अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जैसे मैं ख़रीद रहा हूँ अपने रहने के लिए, वो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उस पर इक्विटी मैटर नहीं करेगी। बलून सॉरी इक्विटी एट बलून, ठीक है, क्योंकि मुझे बस पैसे पे करने, जैसे 700 का घर मुझे मिलता है पर मंथ पे, ठीक है, मैंने किसी को दिया 800 पे, ठीक है, वो जो $100 का डिफरेंस है वो मेरी जेब में आता रहेगा हर महीने बगैर कुछ करे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट, अब मुझे बलून की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेरी तो इक्विटी वैसे भी नहीं है, राइट। मैंने तो सिर्फ $100 ऊपर करके इसको बेच दिया है कि मुझे $100 महीना मिले, बट मेरी अपनी तो इक्विटी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप हाइब्रिड रख रहे हो या फिर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हो, तो फिर आपको बलून की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो किस तरह मिल रहा है और सेलर को कितना पे करना है। और अगर आप उसको खुद इन्वेस्टर ले रहे हैं, तो एट द एंड इन्वेस्टर उसको 8 साल 9 साल के बाद उसको पिक्चर से निकाल देगा सेलर को, और ख़ुद प्रॉपर्टी ओन कर लेगा सब। हाइब्रिड में रीफाइनेंस नहीं करते हैं। हाइब्रिड में भी रीफाइनेंस हो सकता है, हो सकता है। वो ऐसे होता है कि आपने जो सेलर को पैसे पे किए हुए हैं वो एक एक्विटी हो गई, और आपने जो बैंक को पे किए हुए हैं वो एक्विटी हो गई, तो दोनों को मिलाकर आपकी एट बलून 25% बन जानी चाहिए फॉर इट टू मेक सेंस। अगर नहीं बन रही तो आप ईयर्स को लंबा कर दोगे। 5 साल पे नहीं बन रही तो 6 साल करो, 6 साल पे नहीं बन रही तो 7 साल करो बलून के, और इसको बलून को बड़ा करते जाओ। ओके या Heather, इसमें offer, he shared you the inspection report and tell him there's a lot of work. I'll go with I don't know, 150. Actually, we probably have to even go to 60% of the asking price. 60% of the asking price, 200. Yeah, start with 120 and then make your way up, because at 120 हमें जो रेंट मिलेगा ना, जो ये मिल रहा है, ठीक है, रेंटल एग्जैक्टली 1200 मिल रहा है, तो एग्जैक्टली हम 1% रूल पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको 120 की ऑफ़र देते हैं तो रेंट के मुताबिक हम 1% रूल पे आ जाएंगे एट 120। That's okay. 20 days ago, that's fine. You can just tell him like, hey, it took me a long. उसको बोलना कि मैं अपने इंस्पेक्टर को मैंने रिपोर्ट भेजी थी, उसने थोड़ी देर में रिप्लाई किया, बट दिस इज़ वेयर आई एम एट। आपने 20 दिन लगा दिए, प्रॉपर्टी 300 दिन से लगी हुई है, डजंट मैटर मैन। ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो नहीं, क्योंकि इसमें इतना काम निकला हुआ है। 20K ऑफर कर दूँ? हाँ, 20K ऑफर एज अ स्टार्ट विल बी गुड। I mean, you can start with 0.5 or 0.55, right? ताकि 120 तक हम मैक्स आए, that's fine too. बट हमें कम से कम 1% रूल पे तो लाना है। अभी इसको रेंट मिल रहा है 1200, तो $120,000 for this property would make sense. Okay. Okay, number 4. That was number 2. Let's see, number 2 is this one. This is number 2. Okay. Number 2 and number 1. Let me check. Okay, 48,000 property, $48,000 property, complete rehab. I can tell. Look at the tiles. This hasn't happened in North America for a very long time. 1915 makes sense. She's probably sort of selling it for the first time. खुशफहमी थी 69,900 की, रियलिटी आई है 48,000 की। दिस इज़ अ कंप्लीट रिहैब मैन। इसको ऊपर से नीचे तक लेके सब कुछ इसमें चेंज करना है।
Yeah, it's a complete rehab. Um, how long? 72 days. This is just for you to add the amazing home to your portfolio. Beautiful, blah blah blah. Kitchen, bath. Need a little TLC. A little. इसमें ये चीज़ आई डोंट नो कि इस घर को अभी तक ये बोल रहा है कि इस लॉट पे आप एक और घर बना सकते हैं बाय द वे आई थिंक यू कैन मेक वन मोर हाउस ऑन दिस लॉट तो दैट कुड बी इंटरेस्टिंग फॉर समवन बट हमको क्योंकि ये एक्सट्रीमली फ्लिप प्रॉपर्टी है इसको 50% उसको ऑफर देनी पड़ेगी इस 48 की भी 50% क्योंकि रूफ पूरी चेंज होगी राइट द बॉटम चेंज होगा साइडिंग मे बी नॉट अंदर से तो बेकार है बिल्कुल बेकार है विच इज़ गुड हमको बेकार प्रॉपर्टी की काम है क्योंकि यही प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट मिलता है राइट किचन के ऊपर से नीचे तक फ्लोर निकलेंगे कारपेट निकलेगा या so go with start with 50% and maybe we can go up to 0.5 right sorry 0.55 वो इस वजह से कि इसमें एक और लॉट भी है जिसको हम बढ़ा के चढ़ा के सेल कर सकते हैं I gave 0.5 good if you give 0.5 on this property that's good follow up on it that's great अगर वो एग्री करता है इट्स अ गुड डील अगर नहीं करता तो 0.55 तक आप चले जाओ शी इज आस्किंग 45K no no there's no way no way देखो 45K आपने में ख़रीदा फॉर एग्जांपल ठीक है आप में कम से कम 50,000 का इसमें काम है कम से कम 50,000 राइट तो ऑल इन आपकी कॉस्ट हो जाएगी अबाउट 100,000 ठीक है 100,000 आपकी ऑल इन कॉस्ट हो जाएगी या 100,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी अगर आप इसको 120 का भी बेचते हैं यू विल लूज मनी 130 का बेचते हैं तो मे बी यू मेक $10-15 10-15,000 I offered 25 with the agent commission of 700 and closing costs covered as a second offer after she rejected. Agent commission of 700? I don't think she will take 700, man. कम से कम 2,000 तो लेगी वो. Which total to 0.5? Really? Okay, that's fine then. That's fine. Yeah. If everything included with agent commission and everything is yeah, okay, with everything, then sure, then it's fine. But yeah, send him the offer and follow up. This could be a good deal for someone who is doing the land development and also someone who's doing the flip. So two people can come in. और एक्स्ट्रा अगर भले वो लैंड नहीं डेवलप कर रहा पर क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है तो फ्यूचर में वो कर सकता है कोई मल्टी यूनिट ऐड कर दे तो उसको ज़्यादा रेंट मिलेगा ठीक है और यंग्स टाउन जो है एक डिसेंट सिटी है इसमें गुड रेंटल मार्केट है मगर वही बात है इसकी घर की प्राइसेस बहुत कम है इस वजह से रेंट जो हमें मिलते हैं इट्स अ वेरी गुड रेंट ओके एनी क्वेश्चंस I'll move on to the next person. I think Mir was the next person. Mir Hamza right here. Last thing, left my message in general. I replied, I think, to most of your messages, but I'll check again. Let me see. Update on Malaika. Malaika की update
आई थिंक क्या अपडेट थी मलाइका की? डिड आई मैसेज यू? दिस इज द हाउस राइट? ये दिस हाउस का क्या था? ये डॉक्यूमेंट्स, या इस पे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं इसको ख़रीदने की। इस पे बात हुई थी। वो 65 बोल रही है कि मिनिमम में जाएगी, हमको चाहिए ये घर 60 पे, ठीक है। तो उसको मैंने प्रूफ ऑफ फंड्स और अपना पोर्टफोलियो बता दिया कि हमने चेंजेस करी हुई हैं, इस तरह के घर पहले बाय करे हुए हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड पोर्टफोलियो फॉर अस। तो उसने बोला ठीक है, मैं जो हूँ बात करके बताती हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग ऑन हर रिस्पॉन्स, ओके। Contracts, everything is sent on this property. So that's the update of Malaika. Gotcha. Yeah. I'm hoping today because कल दोपहर को बात हुई थी, कोई शाम के वक्त उसका दोबारा कॉल आई थी। तो आज शाम को, which I'm guessing in probably, I don't know, 2-3 hours, I'll have something. ठीक है? So that would be the response on Malaika. But she was good. She talked to me nicely, and she was listening. She understand all the things. So I think there is a potential here. I'll open that. भाई मैंने ये की, भाई कल वाली ऑफर का क्या सीन है? लेट मी सी। आपके मैं मैसेज देख लेता हूँ। Yes, Zed, I will check your DMs right now. Is this that property? No. Looks very similar. Buyer to individual, all the property condition and things like that. इस पे 102 की ऑफर 102 किया था, 53 के वाली। जैकरी को ऑफर, इज इज जैकरी? या जैकरी को हमने ऑफर नहीं करी अभी तक। मैंने डीएम किया है, आपकी डीएम को मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए वो 95 अगर कह रहा है ना इस प्रॉपर्टी का, तो वो पागल है। अगर वो वाकई में 95 कह रहा है तो ये पागल है। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इसका कुछ हाल नहीं है। इसको गिराना है, इसको बुलडोजर से गिराना है और इस पे नई प्रॉपर्टी बनेगी। लुक एट द ट्रीज एंड घर के ऊपर ट्रीज आ रहे हैं। आई मीन दिस इज़ बैड, राइट। तो ये प्रॉपर्टी पूरी करेगी, गिरेगी, ट्री फिक्स होगा, घास कटेगी, इस पर पेवमेंट डलेगी। इस पर बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। नो वे कि इसको 190 मिलेगा, नहीं। तो आप इसको 53 पे ही रखो। 53K would be our best offer, honestly best of the best offer. टेक्निकली हमको जाना 60% ऑफ पे जाना है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत बढ़ाते रहना है, फिर जाके 50 पे फाइनल करनी है, ओके। बट दैट रिमेंबर, अगर आपने इसको ऑफ़र कर दिया और उसको आप उस पर वेट करोगे ये एक्सेप्ट करे, आपने गेम लूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गेम है कि आप जितनी ज़्यादा ऑफ़र करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगा। क्योंकि 50% ऑफ 100 लोगों में से कितने लोग चाहेंगे देना अपनी प्रॉपर्टी पे? बहुत कम लोग, राइट। मे बी 10 लोग देंगे 50 में से, या 5 लोग देंगे 50 में से। 100 में है तो अगर, तो मे बी 10% लोग ओके बोलेंगे, उनको कोई मुसीबत होगी, किसी वजह से पैसे चाहेंगे। बाकी के थोड़ा वेट करेंगे, और वेट करके फिर वो 10, मतलब 3 महीने गुजरने के बाद, 4 महीने गुजरने के बाद फिर वो 10% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। तो आपको नंबर गेम करना है। अगर आप 100 लेटर ऑफ इंटेंट भेजते हैं, LOIs, तो उसमें से 10 लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी ऑफर में, सॉरी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी को आपने रुकना नहीं है उस पर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ आप ऑफर देंगे, तब जाके उसमें से 10% रेशियो निकलेगा।
आपको चीज़ मिलेगा। और ठीक है, इसमें काम आप टेक्निकली आपको 100 भेजनी है, उसमें से एक निकल रहा है, बट टेक्निकली उसमें से एक आपको कंफर्म होगी डील। यू कैन मेक इनफ मनी कि आप अपने 100 ऑफर्स की मेहनत वापस मिल जाएगी आपको, राइट? सो दैट्स द इन्वेस्टमेंट। और हमें करना क्या है? हमें सिर्फ घर में बैठ के ईमेल करनी है, राइट, और कॉल करनी है बेसिकली। उससे ज़्यादा हम ना उधर जा रहे हैं, ना हम पैसे लगा रहे हैं, ना हम फिक्स कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ना हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ um, हम बस इसको फिगर आउट कर रहे हैं और आगे बेचते रहे हैं। हमारा काम सिर्फ बीच का है, तो हम छोटी सी फीस ले रहे हैं और ये सारा काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट हार्ड वर्क फॉर अस। 80K तक ठीक है? नहीं, 80K भी बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू बी एट 53 मैक्सिमम। क्योंकि देखें, 53 लेके भी आपको पूरा घर गिराना है। पूरा घर गिराने में कोई 5,000 की कॉस्ट आएगी, जो मशीन आके गिराएगी। गिरा के जो गिर जाएगा, उसका सामान भी उसको वापस लेना है, फिर उसको डंप करना है। ऐसा नहीं है कि पीछे एक बड़ा सा खड्डा है उसमें डाल दिया सारा सामान, नहीं। इसको प्रॉपरली डंप करना होता है। जो डंपर्स होते हैं वो सिटी के बाहर होंगे। मेटल अलग जाएगा, लकड़ियाँ अलग जाएंगी, ग्लास अलग जाएगा। सो इट्स अ बिग कॉस्ट। डंप करने की भी कॉस्ट होती है, राइट? अब वो सब कर लिया आपने, 10,000 का तो आपने डंप किया, घर को प्रॉपर्टी फिक्स करी। अब आपको घर भी बनाना है उस पर। अब घर बनाने की कॉस्ट जो आएगी 50, 60, 70,000 डॉलर्स, दैट्स ऑन टॉप ऑफ इट। तो आप तो नेगेटिव में हो जाएंगे, राइट? ओके, तो आपने इसको ये ऑफर दी, वो नहीं मानता, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हर वीक में एक दफ़ा आप उसके पूछे, हे आई एम जस्ट वंडरिंग इफ द सेलर मूव्ड ऑन द प्राइस, यस और नो। बोलता है नो, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कम बैक इन अ वीक, दैट्स इट, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, ज़ैड होपफुली मेक सेंस। ओके, आप इस पे रुकना नहीं, आप दोबारा किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे ऑफर करो एंड देन गो फ्रॉम देयर, गो फ्रॉम देयर। Okay, I'll check Hamad DM. It's the first one on my list. LOI 3317, mortgage payments $8,225. Say, bhai, I have to leave for gym. Kindly leave me a message with what numbers we are going ahead on this now. The main concern is the down payment. Let me see, where was that actual numbers? ओके, तो ये घर है, बंदा बोलता है 8,000 की मंथली पेमेंट है। ओ माय गुडनेस, हाउ इज ही गेटिंग 8,000 per month payment on this? उसको चाहिए 8,000 per month payment. How can you make 8,000? How can you make 8,000? I'm not sure, man. This is way too bad. This is bad. I mean, I don't know what interest he's getting, but 8,000 per month. अब देखो, 8,000 per month वो बैंक को दे रहा है, और उसको पैसे मिल रहे हैं 7,600 के। 7,600 के पैसे मिल रहे हैं और बैंक को 8,000 दे रहा है। दैट मीन्स ही इज लूजिंग मनी पर मंथ। पर मंथ को ये वो ऑलमोस्ट $1,000 से ज़्यादा लूज कर रहा है। और ये जो है ना, ये ग्रोस रेंट है, ठीक है? इट्स अ ग्रोस रेंट, क्योंकि नीचे निकला हुआ है। तो ही इज लूजिंग मोर देन $2,000 पर मंथ। इट्स नॉट अ गुड डील। वो इस जगह पे पैसे बना ही नहीं रहा। I don't know what to tell you, man. There is no way कि हम एक तो 8,000 का मॉर्गेज कवर कर पाए, पहली बात।
दूसरी बात कि मिस्टर सेलर को कुछ दे पाए इसमें. So it's a tough one. ओके, लेट मी चेक. अगर हम इसकी, क्योंकि ये जो है ना टेक्निकली लोन अजम्पशन वाला केस भी हो सकता है कि हम लोन अज्यूम करें और उसको बाहर निकाल दें बेसिकली, राइट. बट लोन अजम्पशन में वो सिर्फ इसी वजह से अलाउ करते हैं कि आपके पास इतने हों. या दैट्स अ टफ वन. He's losing money. He's in. We cannot do loan assumption on this one. Definitely. Yeah, we cannot do loan assumption. क्योंकि लोन रहता ही 1.7 मिलियन का है, राइट. अगर लोन 1.7 मिलियन का रहता है, देन व्हाट इज लेफ्ट. 1.7 मिलियन का लोन रहता है. सॉरी, 1.17 एक्चुअली. या 1.17 का लोन रहता है और ये बेच 1.2 का रहा है. ठीक है. हम लेते हैं 1.1 मिलियन का, और एट द 8,000 पेमेंट्स नॉट गोना वर्क. या हमारा अनफॉर्चुनेटली यू जस्ट हैव टू लेट गो. इसको तकरीबन 1-2 साल ये और ख़रीदे, फिर जाके नंबर्स नीचे आएंगे, देन वी कैन डू समथिंग. बट he's losing money. He's losing money like about 2,000-3,000 per month on this property. Sorry to say, man. I know I like this property and everything, but he's losing a lot of money. Yeah, there's. I just checked. There's nothing we can do. Just move on. Next one. Um, let's see. I think there's the next question. Oh wow, empty property. This में मैंने ऑफर करी हुई है. I know this one property. Yeah, this इसका मसला बहुत है. इस पे लोन है वो फिक्स एंड फ्लिपर वाला लोन है, और बीच में से काम करते रहते फ्लिपर भाग गया. तो अब वो बेचारा फंसा हुआ है कि लोन पे करना है, एंड इसको फ्लिप करनी है. बट यू हैव टू कम एट वेरी लो. यू हैव टू कम एट probably I gave him offer in 50,000 on this, Heather, and he rejected it at that time. That's probably like a month ago. Yeah, probably a month ago. He rejected my offer of 50,000. Go with 60. If you want to offer something, maybe go with 60 and see if he changes his mind. But because मैंने जब करी थी वो उस वक्त मार्केट पे आया था, मे बी 20-25 दिन हुए होंगे, आई डोंट नो. बट आप इसको 60,000 देखो और फिगर आउट के वो क्या करता है. एनी अपडेट ऑन माइकल ग्रीनिच? Let me check the Michael. Thanks.
We have maybe 25 to 20K worth of work per house. It's not all needed immediate earlier. वो बोल रहा है कि उसकी जो घर है उसमें 20 से 25 हज़ार का पर घर खर्चा आएगा. वो फ़ौरन नहीं करना बट उसका खर्चा है. So while I understand what you have been going on, still send us an offer. We were negotiating. Uh, who has the final say with the numbers? वो पूछ रहा है कि जब हम बात कर रहे थे तो आपने कोई और प्रॉपर्टी क्यों ख़रीद ली. आई मीन उसके बात करने पे थोड़ा डिसाइड करते हैं. हमने आपको नंबर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं करे, सो देन वी बॉट डिफरेंट प्रॉपर्टी. हु हैज़ द फाइनल से नंबर. इसको रिप्लाई कर दूंगा. इसको एक्चुअली इसके पास वो दिखाना है इसको, प्री अप्रूवल दिखाना है जिसको पता, ताकि इसको अंदाज़ा हो कि वी हैव द मनी, देन वी शुड बी गुड. आई एम पार्टनरिंग गाइस. मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ जिसका उसका इन्वेस्टमेंट फर्म है. ठीक है. मैं उससे करूँगा ये कि उससे पार्टनर बनकर आप लोग उसके पास जा सकते हैं और उससे प्री अप्रूवल निकाल सकते हैं. ठीक है. तो वो आपको टेक्निकली तो वो फेक होगा. फेक से मुराद के अप्रूव तो कर देगा वो आपको, बट वो आपको पैसे देगा नहीं, आपको लेटर दे देगा वो अप्रूव करने के बाद. तो वो लेटर आप लोग खुद जमा करा दो एजेंट्स को. बट द डील आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. ही इज़ आस्किंग लॉट ऑफ मनी, सो वी आर नेगोशिएटिंग ऑन दैट. पर अगर कुछ ऐसा होता है हमारे साथ तो इट्स गोना बी वेरी इजी. फिर आप लोगों को प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं चाहिए होगा. मतलब चाहिए तो होगा बट मुझसे नहीं मांगना पड़ेगा, या हमारी टीम को एक ही बैंक अकाउंट से प्री अप्रूवल नहीं निकलेगा, बस एक इन्वेस्टर भेज देगा अपनी तरफ से. तो दैट वुड बी अ गुड वन. What you said about the prop, I was not there. What prop? Prop wire? I'm not sure what you're talking about the property. Are you talking about this property? I was saying I offered him 50,000. I offered him 50,000 about a month ago. ठीक है. मैं इस पे बात कर रहा था कि जो वन ऑफ द इन्वेस्टर वाज इंटरेस्टेड इन इट हमारे ग्रुप में, मगर क्योंकि इसमें सब कुछ सिर्फ ढांचा है, इसमें सब कुछ आपने करना है, काउंटर टॉप, फ्रिज, स्टोव, बाथरूम, एवरीथिंग का टाइल्स, फ्लोर. तो हमने $50,000 की ऑफ़र दी थी उसको उस वक्त, एंड ही रिजेक्टेड इट. ही सेड द बेस्ट आई कैन डू, ही सेड समथिंग अबाउट 90,000. ठीक है. एंड देन 90,000 पे वर्थ नहीं करती थी. देन आई वेंट डाउन. Scroll down to where? Here. He bought it for 20K. Is that what you're saying? So listed for rent. I'm not sure what you mean by 20K, Heather. What do you mean direct messages? Yeah. The thing is, लिस्टिंग यहाँ पे जो है ना, ये सोल्ड नहीं हुई ना. इट्स अ पेंडिंग सेल फॉर, सो इट्स प्रॉब्ली गॉन अंडर कॉन्ट्रैक्ट. ये तब की बात है, तब इसने नहीं ख़रीदा हुआ था ये. ठीक है. ये तब की बात है, ये जो जिस बंदे की है उसने ख़रीदा था 13,000 की. ठीक है. या तो इसने सिर्फ ढांचा रखा है और देन ही इज़ डन, इसके पैसे ख़त्म हो गए होंगे तो इसने बोला है, राइट. तो क्योंकि उसने ढांचा रख दिया तो 13,000 में उसने पैसे लगाए होंगे. ज़ाहिर सी बात है, ढांचा लगाने के भी पैसे. हो सकता है इसने लैंड लिया हो 13,000 का, या एक बहुत ख़राब सा बनाया होगा, तोड़ के उसने बनाया होगा. तो 13,000 पे इसने लिया, फॉर एग्जांपल लिया होगा, फॉर एग्जांपल उसने ढांचा बनाने के लिए पता नहीं कोई 30,000 लगाए होंगे. तो दैट्स वाई वी गेव हिम ऑफर ऑफ 50,000 कि जो भी इसका ढांचा है उसके वो पैसे निकल जाए और बाकी पैसे बाकी हम देखते हैं, राइट. क्योंकि जब तक ये 48 डेज लगा हुआ है, इसको रेंट तो मिल नहीं रहा, राइट. इस जगह पे कोई रहेगा तो नहीं, राइट. तो रेंट तो इसको मिल नहीं रहा. इसकी लोन की पेमेंट, जिससे लोन लिया है वो पैसे जा रहे होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा होगा, इंश्योरेंस जा रही होगी, राइट. सो ही इज़ इन बिग ट्रबल राइट नाउ. If you look at it, look at the price cut, 69,000 price cut.
बहुत ज़्यादा खुशफहमी में था कि इसको बिक जाएगी कोई 2 लाख की, 2,14,000 की, right? It's just stupid pricing. But again, he's gonna go down to probably 80,000 in probably in a month, और फिर 60,000 की ऑफर वो ले लेगा. ओके तो आप ऑफर करो इसको 60,000 की, ठीक है. मैंने 50 की थी, इसने रिजेक्ट कर दी, तो आप या तो 55 से स्टार्ट कर लो या 60 से स्टार्ट कर लो. बट आई थिंक 68 हमारा नंबर हमने कैलकुलेट किया था. 68 वुड बी द बेस्ट. नो, वी कैन नॉट टेक ओवर द मॉर्गेज, हैदर. Why we cannot take over the mortgage? Because there is nothing we can do, right? प्लस हमको फिक्स करना, मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स होती है तो हम उसका मॉर्गेज टेक ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लोन लेना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, ठीक है. वो एक डिफरेंट मॉर्गेज होता है. तो वो मॉर्गेज रहने वाला मॉर्गेज नहीं होता, वो सिर्फ फिक्स एंड फ्लिप का मॉर्गेज होता है. So that's why we cannot do anything with this property other than a cash offer, and a low ball cash offer would be just fine. ठीक है. तो अगेन गाइस, कहीं पे भी प्रॉपर्टी अगर बेकार लग रही है आपको, इसका सिर्फ एक ऑफर दे सकते हैं, कैश ऑफर, ठीक है. इस पे कन्वेंशनल नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक बोलेगा कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो मैं इस पे 145,000 का क्यों लोन दूँ. कल को ये भाग गया तो मैं इसको वापस मार्केट पे सेल करूँगा, मुझे 145 नहीं मिलेंगे. तो बैंक तो कभी भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की बहुत बुरा हाल ख़राब है. क्रिएटिव सेल्फ फाइनेंस कर नहीं सकते, क्योंकि आपको रेंट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है. मॉर्गेज टेक ओवर नहीं कर सकते क्योंकि रहने वाला बंदा कोई नहीं है. और दूसरी बात ये कि आपको एक अलग से लोन लेना पड़ेगा फिक्स करने के लिए, राइट. तो एक ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ऑप्शन, जो कि कैश ऑफर है, और लो बॉल कैश ऑफर. बहुत ज़्यादा आपको कम करनी पड़ेगी कैश ऑफर, तब जाके मेक सेंस करेगा, ठीक है. तो मैं इस पे ये नहीं बोलूँगा कि आप 70% का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि इसने बहुत ही बेकार प्राइस लगाई हुई है, राइट. अगर आप फॉर एग्जांपल 50% का फॉर्मूला लगाते इस नंबर पे, ठीक है, 214 पे आप 50% वाला फॉर्मूला लगाते, आपकी प्रॉपर्टी तब भी बहुत ख़राब थी, राइट. 50% ऑफ का मतलब है 100,000 ऑलमोस्ट. दुनिया में कोई भी बंदा इसको 100,000 का नहीं देगा. तो आप 50% की, तब इसकी पिछली प्राइस पर तब भी ख़राब है, अभी भी अगर आप 50% की लगाएंगे तब भी ख़राब है, राइट. जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ 50 से 60,000 इज़ द वैल्यू, क्योंकि इसने 13,000 14,000 की ख़रीदी होगी, मुश्किल से 15,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदी होगी, इस पर सिर्फ उसने ढांचा डाला है, एंड देन ही इज़ डन. उसके बाद पैसा ख़त्म होगा. The balance owing is 40K left. The loan amount was 55K. If the payment is 300 loan, he's saying. अगर ये घर 55,000 का इसने लिया है, तो हम इसको 55,000 देंगे बस. अगर उसने 55,000 का लिया, ताकि इसको जेब से कुछ नहीं लाना पड़े, 55,000 दे के इसको फिनिश करते हैं. ठीक है. द थिंग इज़, अगर इस पे ऑलरेडी लोन है ना, तो हम लोन को टेक ओवर नहीं कर सकते, भले वो $10 का भी हो, क्योंकि हमें जो उसको फिक्स करने की लोन आएगा वो एक डिफरेंट लोन होता है, और वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, वो बैंक के नीचे नहीं जाएगा. तो हमें तो इसको कैश ऑफर देके इसको घर भेजना है, इसका लोन ख़त्म कर देना है, फिर हम अलग से फिक्स एंड फ्लिप का लोन लेंगे. वो बैंक आएगा फर्स्ट पोजीशन में, कि आप इसको पहले फिक्स करोगे, फिक्स करने के बाद जो भी आपको पैसे आएंगे पहले आप मुझे दोगे, फिर बाकी काम करोगे, ठीक है. अगर कोई और लोन भी है तो फिर वो नहीं बोल सकता पहले आप मुझे दो, क्योंकि कोई और लोन ऑलरेडी है, तो वो फिर आपको लोन नहीं देगा फिक्स करने का. तो फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, कि ना आपको लोन मिलेगा, ना प्रॉपर्टी फिक्स हो पाएगी, ना ये रेंट हो पाएगी. ओके. Let me see, Zad send me one property, let's check. 45, house looks good, pictures look good, 39 pictures, nice house. Houston, yeah, it's a good seller finance. Okay,
भाई एजेंट का कॉल कह रही है, एजेंट को कॉल करना है, ओके, एंड द एजेंट नंबर्स। इस पे आपने ऑफर्स को क्या दिए? आई नीड टू नो कि आपने ऑफर्स को क्या दिए, कितने नंबर के ऑफर दिए, ताकि मैं उस पर इसको बात करूँ। एंजिला से बात करनी है, वो टॉक। आई नीड टू नो आपने किसको क्या क्या ऑफर करी है, so that I can talk to him. अभी ऑफर नहीं दी, ओके, देन आई कैन जस्ट कॉल। दैट ट्राई योर बेस्ट टू, आप उसको ऑफर दे दो। ऑफर के बाद वो मना करती है, हाँ करती है, नखरे दिखाती है, देन वी विल कॉल, ओके। बिकॉज राइट नाउ ये बस एक डिस्कवरेबल कॉल होगी, जिसका बेसिकली कोई सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। बट I'll call 92। आपने अपना नाम जैद बताया? Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. नॉर्थ रिज बायर। Thanks. Please stay on the line. Good afternoon. Hello, this is Zad. We have been speaking over the email on the property at the North Hi, Ridge. how are you? I'm doing very well. How are you? I am doing well myself. Very good. Yeah, so I think, what were your questions again? I can't quite remember. I get so many requests. Yeah, I guess Um, I want to know quickly that is it rented or what the rent are you guys picking up on this? no, it's not. Do you have access to HAR or to Realtor.com? I Um, think all that information is on there. oh, it is. I'm looking at Zillow right now, but I can open it up in Realtor.com. Okay, and the just want to know if the seller is pretty firm on the price, because we did recently a fix and flip, and we sold it. It was a bit less of what is listed right now. So I want to know if the seller is a little bit open to kind of negotiate on the price, or he's set with that. Um, the seller's open to negotiate, but it can't be like, some ridiculous amounts. Right, right, I've got some ridiculous contracts that the sellers don't even want to see. right. So, yeah. So if it's just some ridiculous amount, it, makes no sense. Mm-hmm. But you can just send, if you want to make an offer, you send your offer in, and but definitely everything is negotiable. Right. Uh, I yeah. I mean, I wanted to know if seller would be open to seller finance at all. No, No. she's not. No, she is not. Even if we were to, No, let's say, that one I come can in. answer to. No, they're not open to that. Okay. Even if we go like 20,000 more than asking. It doesn't matter. Doesn't Not matter? Okay. open to it. Okay. Sure. So they're only She looking. literally just want to get rid of the property and not have it to deal with, and she wants a clear cut transaction. Right. Uh-huh. How's the roof on the property? Do you know, has it been replaced at all? That roof has been there for ages, ages. So, it doesn't leak as far as I know. But if I was buying that property, I would probably want to change the roof. Yeah, because the roof looks like it needs some work. We might want to come in. That roof, that's why I tell you it's negotiable, because things like, the price is negotiable. She's not going to do any repairs, but the price is negotiable. Right. Because, things like this, maybe someone might want to buy it and change the roof, take out the flooring. Yeah, she'll then she'll take a reasonable offer. Reasonable offer. And Yeah. in the backyard, there's a lot of bushes. Is that the trees that needs to be There's removed? no bush in the backyard at all. No Okay. bush at all in the backyard. The Okay. backyard is absolutely clear. There is big lawn from the photos you can see. Right, right. There's a fence at the end of the property at the back. There should be fencing around the sides. Part of it is broken down. I know that behind those trees, there are a few trees that line the fence area,
And behind there, I saw there was a horse. I saw one horse behind there. So Oh, that okay. I can tell you. Yeah. Okay. But behind there's not a lot of trees. There's a horse, but it's mostly open land from what I could see. Very nice. Okay. Yeah, I mean, I will run this by my contractor and see what kind of budget he's given at. Do you know what the ARV look like on this property? No, I've never really checked that. Okay. I've never checked. So, That's all right. yeah. I'll Yeah, run some numbers. but it's close to downtown. It's close to downtown. Right. Yeah, it's fairly close. Yeah. You're right. Okay, so yeah, I'll run the numbers with my contractor on this, and then kind of give you a yeah, an offer, and we can go from there. Okie dokes. Thank you Awesome. very much. Thank you. You take All care. right, babe. Bye bye. Uh-huh. Okay. No repairs. Price to sell low. Offer automatically rejected. Sale low offer. Basically low ball offer or automatically rejected. इस घर में 10,000 की तो आप रूफ कहीं नहीं गई. एस्टिमेट घर के अंदर घर में ये रेंट पे तो आप दे सकते हैं उसको, बट अगर ये खाली है देन वी हैव टू फिक्स द होम बिफोर गिविंग ऑन द रेंट. या तो घर में चेंज करना पड़ेगा. सो आई थिंक इट वुड प्रॉब्ली बी 0.6 ऑफर. 0.6 ऑफर times 0.6. Yeah, 87,000 would 85 I would start with, and go up to 87. Okay Zen, आप इसको ऑफर कर दो 87 की 85 की, और फिर इफ शी से नो उसको बोलो कि मैं जो हूँ आपको क्लोजिंग कॉस्ट पे कर दूंगा. अगर फिर नो बोलती है तो आप 85 से 87 तक चले जाओ. Okay, is it making sense? I'll write down for you 85K offer on this property. Okay, I'll check general real quick, see if I miss any questions there. I think Heather had a question there. Hashtag general. Why the down payment becomes red when we switch to sub 2? Yeah, because the down payment goes red. One second, I'll show you why. जब आप सेलर फाइनेंस को आप सब 2 पे करोगे तो ये डाउन पेमेंट यूजुअली गोज रेड, राइट. सब 2 में सब 2 में जो बैलेंस होता है ना, जो भी बैलेंस होता है, जैसे ये घर, लेट मी मेक नंबर्स इजी फॉर नाउ. ठीक है, सब 2 में जो परचेस प्राइस है, ठीक है, वही आपकी एंट्री फी बन जाती है. ठीक है, और जितनी भी रिमेनिंग प्राइस है, राइट. तो बेसिकली डाउन पेमेंट ये 100,000 आ रहा है, राइट, जबकि डाउन पेमेंट आपने यहाँ पे लिखी हुई है 40, पर ये 100,000 आ रहा है. तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है परचेस प्राइस का और जो वो ओ करता है, यहाँ पे 0 ओ लिखा हुआ है, राइट. अगर मैं इसको कर दूँ 70,000, ठीक है, तो अब डाउन पेमेंट आ गई 30. ठीक है, 100,000 माइनस 70 इज 30,000. तो 30,000 आपकी डाउन पेमेंट आ गई. इसका मतलब है कि सेलर की इसमें 30,000 इक्विटी है. ठीक है, सेलर की 30,000 इक्विटी है सब 2 डील में. तो क्योंकि सब 2 जो होता है वो हाइब्रिड नहीं है, आपको अभी पेमेंट करनी होती है सेलर को, सेलर की इक्विटी, और उसको बाहर निकालना पड़ता है. तो इस वजह से ये रेड हो जाता है, क्योंकि 30,000 इज अ लॉट ऑफ पेमेंट. ठीक है, 30,000 अगर आप यहाँ पे डालें
तो ये 30% ऑफ द हाउस है, ठीक है, विच मेक सेंस, 30,000 30% ऑफ द हाउस। तो इस वजह से ये रेड हो रहा है कि आप इसको सब टू नहीं कर सकते। अगर आप हाइब्रिड करेंगे ना तो ये फिर कोई इतना मसला नहीं है, फिर देन वी कैन वर्क इट आउट। फिर हम इसको कर दें, अगर आई डोंट नो 10,000, तो ये ग्रीन हो जाएगी, जितनी ये लिखी हुई डाउन पेमेंट उतनी यहाँ जाएगी, ठीक है, हाइब्रिड में। मगर सब टू में क्योंकि आप बस मॉर्गेज टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उसका मॉर्गेज है आपने उसको टेक ओवर किया है, तो जितनी भी उसकी इक्विटी है वो आपको अभी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन दिस केस ये 30,000 की इक्विटी है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैं सब टू नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सेलर फाइनेंस में ले जाऊँगा, हाइब्रिड में ले जाऊँगा, जो कि सब टू और सेलर फाइनेंस साथ में है, ठीक है। दैट्स वाई इट टर्न रेड। अगर उसकी क्योंकि हाइब्रिड सब टू डील उस पर लगती है जिस पे लेट्स से इसकी कोई 95,000 है, राइट, 95,000 उसका लोन बैलेंस है, उसने प्रॉपर्टी लगाई हुई है 100,000 पे, 5,000 की इक्विटी उसके पास ओनली है। तो अभी क्योंकि आफ्टर क्लोजिंग कॉस्ट एंड एजेंट कमीशन सेलर का पानी सर पे आ जाएगा, राइट, ही इज ड्राउनिंग, ठीक है। तो हम उसको वो 5,000 दे के इसको हटा, 5,000 भी मुश्किल से देंगे, वो भी देंगे, उस 5,000 में बोलेंगे तुम अपनी क्लोजिंग कॉस्ट भी पे करो और एजेंट को भी पे करो, ठीक है। देन वी विल गो आउटसाइड, फिर इसको हम छोड़ देंगे, घर को ले लेंगे बेसिकली। ओके, डज दैट मेक सेंस? Does that make sense? Why it turned red? Like purchased by 30K and it's showing 10K. In my image, why is that? नहीं, देखो परचेस प्राइस से इसका फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कितना लोन रहता है उससे फ़र्क पड़ता है, राइट। अगर आपकी इमेज में वो 100 के यहाँ बोल रहा है तो आप ये देखो लोन बैलेंस कितना है, लोन बैलेंस माइनस परचेस प्राइस, जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। 100,000 माइनस 95 इज 5,000, तो इन डाउन पेमेंट हमारी 5,000 की होगी, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। परचेज प्राइस 100,000 की, लोन बैलेंस जो है 95 का, तो इसके अपने पैसे 5,000 है, तो वो 5,000 की डाउन पेमेंट बन जाएगी और घर हम ले लेंगे उससे। Okay, I'll copy the image link here. Okay, तो आप हो सब टू पे, ओके दैट्स गुड। ये आपका हाउस प्राइस है, बैलेंस आपका इतना है, तो इसका डिफरेंस, राइट, इस प्राइस का और इस लोन का डिफरेंस है 100,000। तो इस घर में 100,000 की इक्विटी है, अगर आप सब टू करना चाह रहे हैं तो आपको 100,000 उसको जेब से देने और फिर घर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मगर इस पर हम सब टू नहीं कर सकते क्योंकि जो पेमेंट डाउन पेमेंट हमारी चाहिए है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, 35% ऑफ द परचेज प्राइस, हम ये नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको सब टू को हटा के हाइब्रिड पे जाएंगे और इसकी ये इक्विटी की पेमेंट्स करेंगे और इस लोन की पेमेंट करेंगे, ओके। 319 minus 216 is 102, okay, 319 minus the loan balance, क्योंकि इतने पैसे तो वो ओ ही नहीं करता ना, उसके उसके तो है ही नहीं वो पैसे। I understand now, yeah. So 319 minus 216 is डाउन पेमेंट, ठीक है। और ये अच्छा तरीका भी है आपको पता करने के लिए कि ये जो डील है इस पे सब टू नहीं लग सकती, ठीक है। इस पे क्या लगेगी, हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे ये रेड हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्रीन होता देन वी कैन डू सब टू, बट अगर इसमें रेड हो रहा है तो फिर आप इसको सब टू को हटा के सेल्फ हाइब्रिड पे ले जाएंगे और यहाँ पे जो डाउन पेमेंट होगी वो डाउन पेमेंट यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ओके।
All right, so that's pretty much it, guys, for today. I will see you guys on Monday in the Discord. But अगर आपके पास कोई बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको रिविजिट करना है बेसिक कंसर्न्स, तो हो सकता है मैं यूट्यूब लाइव करूँ. You can see me there, and I can go into that. Kindly check DMs. Update on this property. Fahim, I'm looking at your text message. Said an agent is saying generally my client needs 9 to 11% for land contracts. उसको बोलो कि ठीक है, we will give you. उसको बोलो 9% दो और purchase price के ऊपर 9% ऐड कर दो. That's it. बात तो हुई है ना, उसको इंटरेस्ट चाहिए, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, हम परचेज प्राइस पे ऐड कर रहे हैं. दैट्स इट. सेम थिंग. हम 10% ऐड करते हैं ना परचेज प्राइस, इसको 9% है, तो आप बल्कि 9% ना दो, उसको 8% ऐड कर लो या 7% कर दो ताकि उसे नीचे रहो, फिर निगोशिएट करके 9 पे आ जाओ, फिर वहाँ पे फाइनल कर दो. प्रॉब्लम ये है कि यार इसमें HOF ही है, इसका मतलब ये किसी चीज़ का पार्ट है, ये अकेले से नहीं है. जहाँ पे HOF आती है वो थोड़ा सा मसला हो जाता है. इसने अपने घर को ब्लर किया हुआ है. I don't know क्यों, बट ऐसा क्या है इस घर में जिसने ब्लर किया हुआ है? I don't know. वैसे गूगल मीट पे आप गूगल होम्स पे अपना घर ब्लर कर सकते हैं, कोई भी बंदा अपना घर ब्लर कर सकता है. इट्स अलाउड. आपकी प्राइवेसी अगर आपको चाहिए घर की, यू कैन डू दैट. नो मिनट में आगे जाऊँ नहीं, ये पीछे करेंगे. वैसे काफ़ी सारे लोगों ने घर ब्लर किया हुआ है. इंटरेस्टिंग. यहाँ पे भी लोगों ने घर किया हुआ है. यार इसमें ये जो घर है ना, आई थिंक इससे HOA फीस है. 3 bedroom 2 bathroom हाउस. इस पे क्या बोल रहा है एजेंट? Our offer is 81,000. Here I may have a proof of funds. May I have a proof of funds and send this offer? What was proof of funds मांग रही है? No, it's not this house. No, it's not this house. It's 120. No, it's 195. It's this house. I need to have this in contract form. I also need to see pre-approval letter or proof of fund. Lisa. Lisa को और offer. Okay, sure. I'll take a note and send information to Lisa. Okay, so I will send Lisa, and there's one more LOI that I need to send from Discord. Yeah, correct. See, I think it's this one. I think this is that clinic thing. Clinic. Yeah. So I'll send the LOI for the clinic, and I will send the LOI for that one Fahim deal. Okay. All right, guys. I will let you guys go. सिर्फ आप मुझे माइकल की अभी क्लास की बात देंगे. आई थिंक उनको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करना है अब. माइकल को जो बात हुई थी वो ये, उससे ईमेल करिए क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको ईमेल करनी है. मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा. उसको कोई रिस्पॉन्ड आता है तो मैं बताता हूँ.
तो आपका माइकल का और वेट क्लिनिक का मैं करता हूँ, और फ़हीम आपका अभी जो डील देखी है हमने उसको पैसे भेजते हैं, ठीक है। Alright guys, we'll see you tomorrow. If you need small questions concern YouTube, or if not, we'll see you on Monday. Okay, bye for now. Okay, YouTube and TikTok, any questions? Is there any questions for YouTube and TikTok? Again, all we are doing is we are purchasing the property and selling the property for 1,000, 2,000 more and making our money that way. Okay, get the property, and if the property is 100,000, get the property under contract for, let's say, 70,000 or 30,000, whatever, right? If it's 70,000, we sell it for 72, 71 actually, because it's very close to the listing price. If it's 50,000, then we sell it for 55, for example. That's it. That's it. Okay. That's all for today. I am pretty tapped out. I need to fix my hair. I'll see you guys tomorrow. अगर आपको कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा, बेसिक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, बेसिक आपको बिल्कुल स्टार्ट से चाहिए, तो अगर मैं लाइव करता हूँ कल सेम सिमिलर टाइम, तो वहाँ पे आप अपने बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास मेरी नहीं होगी, तो मैं आप लोगों पे ज़्यादा फोकस होऊंगा। सो एनीवेज, आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय फॉर नाउ।